Student, see question. Find the coordinates of a point A, where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -3 और ए बी क्या है, डायमीटर है. यहाँ बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4. हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है. स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, सेंटर क्या होगा, मिडिल होगा, उन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ये सेंटर ओ होगा. नाउ नेम सेंटर ओ, ओ से हम रिप्रेजेंट कराएंगे, दैट इज 2, -3. एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, y. So center is the midpoint of the diameter. Now midpoint of AB is x plus 1 by 2, y plus 4 by 2. Student, x1 plus x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ये midpoint का फॉर्मूला था, midpoint ऐसे निकालती थी, तो वही अप्लाई किया है मैंने. Now compare x and y coordinates of this point with center 2, -3. So x plus 1 upon 2 is equal to 2 होगा, that is equal to x plus 1 is equal to 4 and x is equal to 4 minus 1, that is x is equal to 3. Now y plus 4 upon 2 is equal to -3, so y plus 4 is equal to -6 and y is equal to -6. 4 को जब हम राइट में लेके आएंगे तो -4, so y is equal to -10. So the coordinates of A is 3, -10. This is a required coordinate.